आप सभी का हमारे न्यू सेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, एज वी हैव डिस्कस्ड द मीन ऑफ द डेटा बाय डायरेक्ट मेथड, by assume mean method and step deviation method. Means all three methods we have discussed already. Today, here is the example number 2 is given of your textbook. In this example, as it is asking, the table below gives the percentage distribution of female teachers in the primary school of rural areas of various states and Union Territory of India. Find the mean percentage of female teachers by all three methods it is asking. तो आपकी टेक्स्ट बुक में सभी तीनों मेथड्स इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही मेथड एक्सप्लेन करेंगे, विच इज स्टेप डेविएशन मेथड. द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन हियर, द परसेंटेज ऑफ टीचर्स and number of states are union territory, that is frequency. Right friends, because first example में हमने आपको तीनों मेथड्स एक्सप्लेन किया था. यहाँ पर हम सिर्फ आपको एक ही मेथड एक्सप्लेन करेंगे. आपके टेक्स्ट बुक में तीनों मेथड्स दिया गया है, और ये भी याद रखना किसी भी क्वेश्चन में सभी तीनों मेथड्स एक साथ नहीं पूछते. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल थ्री मेथड्स सेपरेटली. चलो, यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेन करने चल रहे हैं आपको. दिस परसेंटेज ऑफ टीचर्स इन द स्टेट्स आर गिवन 15 to 25, 25 to 35. दिस इज ट्रीटेड एज अ क्लास इंटरवल, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरी इज गिवन. दिस इज राइट. ओके फ्रेंड्स, सो फॉर the step deviation method, I have made these 4 more columns: xi, which is class marks; di, which is deviation; ui, that is xi minus a upon h, or you can say this is di upon h; and the last column is fi ui. Right friends, so let us find out first of all the xi, which is class marks. So to find out the class marks in this question, we have to, as we have discussed the formula of class marks. class marks का क्या formula बताया था हमने? lower class limit plus upper class limit divided by 2. So we have to find out lower class limit is 15, upper class limit is 25. 25 plus 15 is 40 divided by 2, which is 20. Similarly, this will be 30, it is 40, it is 50, it is 60, 70 and 80. So क्लास मार्क्स किस तरह फाइंड किया गया? आप रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं. आप उसका मिड पॉइंट भी कह सकते हैं. मीन्स लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2. किसी का भी चेक कर लेंगे. सो 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 इट इज. अभी हमें क्या करना है? वी हैव टू एज्यूम द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है. सो लेट अस, दिस 30 इज ए. अभी हम 30 को ए सपोज कर लेंगे. इफ यू आर टेकिंग ए एज अ 30, अभी आपके टेक्स्ट बुक में इस एग्जांपल में क्या ए एज्यूम किया है, दैट आई डू नॉट नो. हमने तो 30 एज्यूम किया, और हम आपको ये सजेशन देते हैं कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप कोई एक नंबर, कोई फिक्स नंबर एज्यूम करेंगे. ऐसा कुछ नहीं, इसमें से कोई भी एक नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो. यू आर फ्री टू एज्यूम, दैट्स वाई इट्स नेम इज एज्यूम. तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. 20 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 70 ले सकते हो, और 80. इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो. आफ्टरवर्ड्स वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ di, विच इज द फॉर्मूला xi माइनस ए. मीन्स सभी इन टर्म्स में से 30 को माइनस करने हैं हमें. तो लेट अस सब्सट्रैक्ट इट. 20 minus 30 is minus 10. Then again 30 minus 30 is 0. 40 minus 30 is 10. 50 minus 30 is 20. 60 minus 30 is 30.
70 minus 30 is 40 and 80 minus 30 is 50। हमने DI का कॉलम कंप्लीट कर लिया। इस XI में से 30 को माइनस करना था हमें। किसी को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम अगर लगती हो तो वो क्वेश्चन अराइज कर सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ UI, और UI की वैल्यू क्या होगी, ये DI अपॉन H। नाउ एक बार फिर मैं आपसे बोलता हूं, HI क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इसका साइज, और साइज कैसे फाइंड करोगे, इसको डिफरेंस कर लो, किसी भी क्लास इंटरवल को डिफरेंस करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो H की वैल्यू हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे 10 सब्सटीट्यूट करते हैं। एंड इन केस कभी कभी क्या होता है, ये क्लास इंटरवल कभी लेस और मोर भी होता है, डिफरेंट होता है। तो जब क्लास इंटरवल डिफरेंट हो तो आप H की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करोगे जिससे कि ये D के सभी नंबर्स उससे डिविजिबल हो जाने चाहिए। तो चलो इन वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हैं। सो -10 इज डिवाइडेड बाई 10 इज -1, 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1, 20, 2, 3, 4 एंड 5 इट केम। ठीक, UI की वैल्यू कैसे फाइंड किया आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द लास्ट कॉलम इज FI UI, मीन्स दिस कॉलम नंबर ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस UI. So let's multiply, 6 1 जा 6, -6, this will be 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8 and 1 5 जा 5। ये हमारा FI मल्टीप्लाइड बाय UI का कॉलम कंप्लीट हो गया। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस कॉलम एंड द सम ऑफ FI UI। सो सम ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स इफ यू आर फाइंडिंग, इसको ऐड करते हैं। सो 6 + 1 7, 7 14, 18 22, 23 24, 25 + 10 इज 35। मीन्स सिग्मा FI की वैल्यू आ गई, समेशन FI is equals to 35। ठीक है, now we have to find out the value of sigma FI UI also। so FI UI -6 is here, इसको माइनस करना होगा हमें। so 7 + 8 15 + 5 20, 7 + 8 15 + 5 20, 30 and 40 -6 is 34 is the value। so sigma FI into UI is equals to 34, right friends। now as assume value you have taken already, A is equals to 30, ये सभी वैल्यूज फाइंड कर लिया। नाउ from step deviation method, we know that x bar is equals to A plus sigma FI DI upon sigma FI। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और मीन अपना x बार फाइंड करते हैं। सो A इज इक्वल्स टू 30 प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाइड बाई H। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। FI UI इज 34 एंड सिग्मा FI इज 35 मल्टीप्लाइड बाई H की वैल्यू हमने 10 लिया है। सो सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। So we got 30 plus 34 into 2 is 68
upon 7, 30 plus 68 divided by 7, 7 9 is 63, 9.5 is remaining, 7 7 is 49. Therefore, we got the value 39.7 is the mean of the given data, or you can say, what was asking the question, find the mean percentage of female teachers. So mean percentage of female teacher is 39.7. Okay friend, in this question, as the percentage of female teachers and number of states were given, this much information was given. So we have find the value of class marks xi, di difference, ui is equals to xi minus a upon h and fi ui. किस तरह फाइंड किया, व्हाट इज द प्रोसीजर, ये हम आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है सो प्लीज़ रिवाइंड द वीडियोस. फिर भी आपको नहीं समझ में आता है सो यू कैन कंप्लेन देयर, यू कैन कमेंट देयर इन द कमेंट बॉक्स. राइट फ्रेंड्स, सो हमें x बार फ्रॉम द स्टेप डेविएशन मेथड, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, and substituted the value, we got the answer 39.7 is the mean percentage of female teachers. Okay friends, see the question number 3. This is example number 3. In this it is given the distribution below shows the number of wickets taken by bowler in one day cricket matches. The number of wickets taken by the bowlers in one day match. Find mean number of wickets by suitable method. So we have to use the method of step deviation because it is easy to calculate, right? So here it is given the information, number of wickets and number of bowlers. Number of wickets are class interval as a 20 to 40, 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350, 350 to 450. Number of wickets as a frequency is given. Number of bowlers 7, 5, 16, 12, 2 and 3. So let's find out the class marks, the value of x, which is the average of this lower class limit and upper class limit. Okay, so let's start completing the columns. xi is the midpoint of this class interval. 60 plus 20, 80 divided by 2, 80 divided by 2 is 40. 100 plus 60, 160 divided by 2 is 80. 150 into 100, that 250 divided by 2 is 125. 250 plus 150 is equals to 400 divided by 2 is 200. Then this is 600 divided by 2 is 300, and this is 800 divided by 2 is 400. So this is the value of xi. From this we need to find out, we have to assume any of the number. So here we are going to take that 125 as the assume mean, the value of a. So let's find out the value of di, and di is xi minus a. So 40 minus 125, it will be in negative because 40 is less than 125, and this will be equals to 85. Afterwards 80 minus 125, that will be minus 45. Then the same is minus, you will get 0. This minus this, you will get 75. This minus this means 300 minus 125, that is equals to 175.
400 minus 125 is 275. राइट फ्रेंड्स, नाउ अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम यहाँ पे h की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे। एज आपका क्लास साइज क्या है 20 to 60 इज द डिफरेंस इज 40. So our class size is 40, but these numbers are not divisible by 40. So we have to take the value of h as convenient, means these numbers should be divisible by that number h. So I think in सभी numbers को we can see that they all are divisible by 5. So हम क्या करते हैं, इन सभी numbers को means h की value को 5 suppose कर लेते हैं. So let h is equals to 5. 5 consider किया. Now we need to find out the value of ui. So minus this divided by 5. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 is remaining, 5 7 जा 35. Then 5 9 जा 45, 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. Afterwards 5 5 जा 25, 5 5 जा 25. Now we have to complete the column of fi ui, means this column multiplied by this is, so 7 multiplied by minus 17, 7 7 ja 49, 7 1 ja 7 plus 4 is 11, 9 5 ja 45, 16 0 ja 0, 12 15 2 ja 30, carry 3, 15 1 ja 15 plus 3 18, 35 2 ja 70, and 55 3 ja 3 5 ja 15, 3 5 ja 15, 116, 165. Now we have completed all the columns. So अभी इन सभी columns का we need to find out the sum of fi column and fi ui column. So the total numbers we have to find out. This is called sigma fi, or you can say n, that is the number of bowlers total. So let's find the sum. 7 plus 3 10, 5 15, 15 6, 21, 22 23, 24 25, 35 and 45 number of bowlers are there. Once again we can check. Friends, in this be careful with the addition and multiplication, especially multiply, addition, subtraction में बहुत ही ध्यानपूर्वक कैलकुलेट कीजिएगा. सो एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं. 7 5 12, 12 6 18, 20 22, 25, 35 and 45. Okay, now we need to find out the sum of this. In these there are 2 negative numbers and 3 positive numbers, so first of all we have to calculate it. The sum of these two numbers will be minus 9 5 14, 4 1 5 1 6 and 1, and the sum of these three numbers, they all are positive. 5 8 7 15, 6 21, carry 2 2 2 4. Now we have to subtract this number from 4 15. 5 minus 4 is 1, 10, 11 minus 6 is 5, and 3 minus 1 is 2. So we got the sigma fi ui is 251 and sigma fi is equals to 45, sigma fi ui is equals to 251. Now and h is equals to, we have taken 5. h की वैल्यू हमने 5 लिया था.
Right friends? So let's calculate the mean by the step deviation method. So from step deviation method, we know the formula x bar is equals to, means mean is equals to a plus x bar is equals to a plus sigma fi ui upon sigma fi multiplied by h. Right friends, so let's substitute the value. A is 125 plus FIUI is 251 divided by FI is 45 multiplied by H is 5. So this 5 is simplified, 5 9 ja 45. Now 125 plus 251 is divided by 9, we have to divide it. 9 3s are 27, 9 2s are 18, 2, 7 is remaining. So this 251 we need to divide it by 9, 9 2s are 18, 7 71, 9 8 is 72, but it is 72, but you have here 71. So what you need to take, 9 7 ja 63, subtract, you will get 8, 0, 9 9 ja 81, so 9 8 ja 72, 2 8 remaining means 8 ja. So we got 27.88, add it, we will get 0.88, 7 5 12, 2 2 4 1 5 and 1 is our required answer in this. So friends, as we got the mean of these information is given 152.88, 8 etc. because continuous it will come 8888, so that this number can also be written as it is asking in this the question, what is mean of this one? What is the question asking question? Find mean number of the wickets. By mean number of wickets we are going to find out. So mean is 152.88, therefore the number of wickets taken by the bowlers is average 152.88 wickets. Right friends? Each bowler means their average number of wickets is 152.88 wickets. Right friends? So in this the procedure I think you all are understand well. As the class interval and number of bowlers were given, so we need to find out the class marks as the midpoint of this class interval. After that we got DI, difference, UI and FIUI, substituted the value. In the formula of step deviation we got the required answer as the mean of the data. Right friends?